ठीक है जी. Alrighty. And now you should be able to see me as well. Can you see me, everyone? Let's have a revision a little bit, and then we will start off with the new concepts. In the last class, we talked about what is present simple, present continuous, present perfect, and present perfect. Sorry, present simple, present continuous, past simple, and past continuous. We talked about these tenses, and we said we established this opinion that present continuous is used for multiple ways, and the most basic one that we have for present continuous is when something is happening right now. For example, I'm talking to you, you're listening to me, I am teaching you, you're learning from me. This is all present continuous. Similarly, when we talk about जी मैं आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ. When we talk about past present simple is a tense which is used most commonly when you want to show any regular activity, any habitual activity, something that happens on daily basis or as a repeated action. It is also used when you want to talk about facts. It is also used when you want to talk about habits or universal truths. इसके बाद सर हम आए पास्ट सिंपल पे. पास्ट सिंपल में हमने बात की कि जी पास्ट सिंपल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट एन एक्शन और अ सिचुएशन व्हिच वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट. इट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट आल्सो एंडेड इन द पास्ट. इसके बाद हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पे एंड वी सेड जी पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड व्हेन समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट, द हेल्पिंग वर्ब was were, and it is used when the subject was in the middle of an action. ठीक है जी. सर जब ये दोनों बातें हमने एस्टेब्लिश की, इसके बाद हमने कहा कि जी वी कैन आल्सो मेक सम कॉम्बिनेशंस विद द हेल्प ऑफ दीज टू टेंसेस. We can use past continuous and past simple together to make a shorter and longer action together. For example, when you called me, I was driving. We established that I was driving is a longer action. On the other hand, when you called me is a very short action compared to that. And whenever you want to show your past shorter actions, you should use it with past simple, and past continuous should be used when you want to indicate the longer actions of the past. Okay. Furthermore, we talked about main events of the past and background. एक दूसरा combination हमने discuss किया सर. The first combination was longer and shorter actions, and the second combination was all about background and main events. Something was happening and suddenly something appeared, and we had a whole example of that. सबको यहाँ तक सारी बातें याद हैं, clear है? Talk to me, guys. All right. Wonderful. All right, let's start now with the new concept. And for this, I would like to use this here. All right, let's suppose that first of all, can you see this OneNote? Can you see the new screen, everyone? Chale. So let me draw that again. Okay. Take a look, guys. ठीक है. Now I'm using a diagrammatic representation for making all of these tenses. Help me out here. All right, I want you to complete this for me. Let's suppose that this is past and this is present. All right, since time flows in one direction, we cannot reverse it, right? This is the past and this is the present. Now, when something is happening in the present, I should plot it here, and diagrammatically अगर इस concept को establish करने की कोशिश करूं तो it should look something like this, right? Something is continuously happening, something is happening, going on non-stop, और मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, कब तक चल रहा है. The point is that it is happening right now, and it is always represented with an ing form of verb, right? सर इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Yes or no? As a helping verb, we use be verb here. Be means is, am, are. Similarly, when something was happening in the past, it should look something like this. So yeah, subject was writing and writing and writing, and he was doing something, and he was continuously doing something without mentioning any time, and this was continuously going on. Again, to represent this kind of action, we need to use an ing form of verb, and here we use the helping verb be, but here
बी मीन्स वॉज वर. ठीक है. थोड़ी आगे चल के ये बात बताता हूँ. सही है. डोंट वरी अबाउट दैट. सर, पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है. नाउ लेट्स सपोज एक काम कुछ ऐसा हुआ कि यू नो लेट्स से आई वाज राइटिंग एंड कुछ इस तरह से हुआ दैट आई केप्ट राइटिंग फॉर क्वाइट सम व्हाइल. मैं लिखता रहा और मैं लिखते यहां तक आ गया सर. ठीक है. So what I'm trying to do is that I'm trying to connect this past action, this past ongoing action with a present ongoing action. For example, अगर मैं बोलूं it is raining, sorry, not it is raining, it should be, since it is past, so it was raining and होते होते अभी तक हो रहा है ये काम जी. It is raining. So this raining which was happening in the past, it is still happening. यानी कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ वो अभी तक चल रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड दिस क्लास 5 minutes earlier. I was teaching 5 minutes ago and I'm still teaching. Do you understand that? Something like this. इस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं सर? इस तरह की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. Right? So present perfect continuous, my friends, is an action, is only used for action. It's not a state verb. There is no state verb here because we are dealing with an ing form of verb. ठीक है. Present perfect continuous is used to show an action that was happening in the past and it is still happening. Do you understand this? Talk to me, people. ठीक है. अच्छा. So now when we want to use something like this, we need to have the helping verb. We need to have this structure. We need the subject first of all, has or have according to the subject. Then we need been again as a helping verb. Then an ing form of verb and then the object. अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जिसको बोलते हैं since या for. Now, if you want to talk about the starting point of action, for example, when we started writing, it was when it started raining, it was let's say 5 p.m. ठीक है, and right now, let's assume that it is 8 p.m. now, right? So 5 p.m., 8 p.m. If you want to talk about the starting point of action, ठीक है, if you want to talk about the starting point, तो हम क्या लगाएंगे? Since लगाएंगे. एक structure तो ये हो गया. So it has been raining since 5 p.m. Sara, not 8, since 5 p.m. Starting point से बात करेंगे. ठीक है? And if you calculate the whole time, इसके बीच में 5, 6, 7 and 8, it has like, you know, a 2 or 3 hours gap. कितने hours का gap है इसमें? Talk to me, people. सर इट हैज अ 3 hour गैप. तो अगर हम 3 hours गैप को कैलकुलेट करके फिर उसके साथ बात करें तो देन वी हैव टू यूज 4. So if you want to say that it has been raining and you want to mention the starting point, you should say it has been raining since 5 p.m. And if you want to talk about the calculated time, the whole time period, बिल्कुल सही है. So if you want to talk about the calculated point of time, calculated period of time, then you should use 4. अच्छा, इसकी एक और डिस्टिंक्शन बन सकती है सागर. इसकी एक और तरीके से भी डिस्टिंक्शन बन सकती है सर. व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक खुद बताना मुझे. व्हेन यू वांट टू से 2001, तो यू शुड यूज सिंस और यू शुड यूज फॉर. सर सिंस आ जाएगा बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. Then if you want to say 2 years, now you don't know which 2 years is that. It's not specific. Now you should use since, or you should use for. So in this case, we have to use for. Do you get it? Bilkul theek hai ji. Now stay with me. If you want to take a screenshot of this one, you can do that. And I'm going to show you a bit more structured picture of this. ठीक है? Do let me know when you're done with the screenshot.
Ato Lalchan, us pe bhi aata hu. ठीक है, if it lasts 2 years. All right, take a look at this one, guys. First of all, all right, take a look at this one. Present perfect continuous is almost similar to present perfect. Present perfect will be aate hain thodi der mein. The common factor is that both of these tenses have past with present. It means that they connect past with present, right? Present perfect connects the past states, and present perfect continuous connects an ongoing action of past to the present time. Yani something that was happening in the past should be happening right now. I was teaching, I'm still teaching. If you want to say this as a single sentence, you should say I have been teaching. ठीक है जी. लेट्स से अगर कोई आपसे पूछता है कि जी कितनी देर से आप तैयारी कर रहे हैं अपने CSS की. How long have you been preparing for CSS? So you should say, I have been preparing since May, or I have been preparing for CSS for 2 months. If this concept is clear, I would really appreciate if you solve this exercise for me. All right. Firstly, take a look at this one. We use the present perfect continuous for an action. In this case, in this example, waiting. The action happens over a period of time for 20 minutes. Here, the period lasts up to the present. Yani, we have been waiting. Take a look at this example now. We have been waiting here for 20 minutes, which means that 20 minutes ago they were waiting, and 20 minutes later they're still waiting till the present moment. ठीक है जी. Let's solve this one. It's a very, very simple exercise. And I'm going to give you 2 minutes for solving this one, and 2 or 10, I want you to solve it with me. बल्कि it's so simple that we can solve it right now. चले जी, मैं पढ़ता जाता हूँ, and I want you to give me the answers right here, right now. So put in the verbs. Use present perfect continuous. Sorry, I'm late. It's okay. I haven't been waiting long. ठीक हो गया. What should I do in blank number 1, everyone? What? Now remember that you have to make a question. What have you been? And make Salim add the verb as well. What have you been doing? Next one. I've been with Mrs. King. She. What's the answer, everyone? She has been, and make sure that you add the verb with it. She has been helping me with my English. ठीक हो गया जी. Your English is very good. You don't need any lessons, surely. How long? Again, a question. Make sure that you put the helping verb first. How long have you been studying English? बिल्कुल ठीक है जी. How long have you been studying English? 8 years now. But my accent wasn't so good before I came to England. And next one is, ठीक है, Salim. I have been trying to improve it. That's the answer. Then number 5, I think it has been getting better lately. ठीक हो गया जी. It has been getting better lately. Now again, present perfect continuous is used when you want to talk about something that was happening and that is still happening. I was talking to you 5 minutes earlier, and I am still talking to you, so I have been talking to you for 5 minutes. Is present perfect continuous clear? Should we move on to the next one? Chala ji. We move on to the next part. And again, I'm really sorry for my writing, not that good, especially with this device. So apologies in advance. Moving on, everyone. Now, we are dealing with the most difficult tense of this topic, of English language, actually. So let's consider this as the timeline again, and time only flows in one direction, so we cannot reverse it.
If that's true, then here we can locate present, and here we can locate past. Now the primary difference between present perfect continuous and present perfect, मैं अभी उसको present perfect simple बोलने की कोशिश करूंगा आसानी के लिए, difference के लिए. So try to stay with me. The primary difference between present perfect continuous and present perfect simple is that present perfect simple या present perfect का scope थोड़ा ज़्यादा बड़ा है. Present perfect continuous only talks about actions, whereas this my friends can talk about actions, state and possessions. तो सबसे पहले मैं state की बात कर रहा हूँ सर. ठीक है, state with कौन सा tense? Present perfect. ठीक है. Now try and understand this, sir. Let's say मैं बोलता हूँ कि जी let's say this is 2021 and let's go 2 years back. What do we have? We have 2019. ठीक है जी. All right. So here I can say that I am a teacher. What is the equivalent of this sentence in the past? Talk to me, guys. बिल्कुल ठीक है जी. You're absolutely true. सर इसको पास्ट में अगर बोलने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा I was a teacher, right? Now if we add times to it, तो I was a teacher in 2019, I am a teacher in 2021. अच्छा, मजे की बात ये है कि this sentence does not have the ability to talk about past because it only talks about present. Similarly, I was a teacher. This sentence does not have any ability to talk about present because it is limited to past. क्योंकि past simple का sentence है तो हम क्या इसको लेके चलेंगे कि जी it started in the past, it ended in the past. याद नहीं है वाली बात सबको? Do you remember this, everyone? ठीक है. अच्छा, क्योंकि I cannot see you guys, so your comments means a lot, right? You have to give me the feedback right then and there कि जी हाँ आप मेरे साथ हैं, मुझे समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है. ठीक है बच्चों? चले. अच्छा सर, अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 2019 से अब तक एक टीचर हूँ. ठीक है जी. तो मैं अब एक ऐसे टेंस को लेके आऊंगा जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट कर सके. ठीक है. और this job will be done with present perfect. ठीक है. Now remember, present perfect is all about a subject, a helping verb, then we have verb in the third form or the past participle, and then the object since and for. इसमें भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा. Now the subject in this case is I, and I के साथ मुझे helping verb लगाना चाहिए have. Sir, this is the present form. This is the past form. इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी मुझे बताएगा कोई? Let's make it here. Sir, be ना नहीं भाई. Sir, is, am, are. पास्ट में लेके जाएं तो was and were. सर INGs की बनाएं तो ये बन जाएगा being, and अगर थर्ड फॉर्म डिस्कस करें तो ये बन जाएगा been. So I need this here. ठीक है. So I have been a teacher. ठीक है जी. I have been a teacher. Now again, if you want to start your sentence, if you want to include the starting point, तो आप या बात करेंगे 2019 से, तो आपको क्या लगाना है, since या for? सर since लगाऊंगा मैं, बिल्कुल. तो I have been a teacher since 2019. Now let us discuss another example for this. ठीक है. Again, we have a timeline. Time flows in one direction. और present में आके एक बंदा बोलता है इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौजूद है. What would you say? How would you say that in English? कि यार ये मैं हॉस्पिटल में हूँ. How would you say that? Come on, people. I am in the hospital or I am in hospital. ठीक है. ठीक है जी. अभी प्रपोजिशंस के अंदर नहीं जाते. इन हॉस्पिटल, एट हॉस्पिटल, हम अभी कहते हैं दोनों सही हैं. चले. आई एम इन अ हॉस्पिटल.
सर यही बात अगर वो पास्ट में बोले, लेट्स से वो कहे कि मैं 2 साल पहले हॉस्पिटल में था, हाउ वुड ही से दैट? टॉक टू मी। सर ही विल से आई वाज इन द हॉस्पिटल। अच्छा, अब हम इसी बंदे की बात एक और सिनेरियो के साथ देखते हैं। इसको पिछले हफ्ते चोट लगी है एंड ही गॉट इंजर्ड एंड ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड ही स्टिल इन द हॉस्पिटल। अब वो कहना चाहता है कि यार मैं 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में हूँ। व्हाट वुड ही से नाउ? व्हाट डू यू थिंक ही शुड से नाउ? सर आई हैव बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। और अगर वो बोले कि मैं 21 जनवरी से हॉस्पिटल में हूं, तब क्या बोलेगा? पूरा सेंटेंस ना बच्चों। आई हैव बीन इन द हॉस्पिटल सिंस 21 जनवरी। अच्छा, मजे की बात ये, इस सेंटेंस को जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, तो हमें बताया जाता था कि जिस सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, चलो। तो जस्ट टू टेक अ क्लोजर लुक एट दिस वन, I want you to solve this exercise, but first of all, I want you to take a look at this one. So this is the same guy. Take a look. यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि यार आई हैव बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 3 वीक्स। मुझे ये बताओ, करंटली इज ही नॉट इन द हॉस्पिटल? ही इज करंटली इन द हॉस्पिटल, यस। बिल्कुल ठीक है जी। सर पास में था और अभी भी है, यानी ये काम प्रेजेंट से, सॉरी, पास से चलता चलता प्रेजेंट तक आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या बोलेगा जी? आई हैव बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 3 वीक्स। ये 3 हफ्ते से हॉस्पिटल में मौजूद है। बट इन द सेकंड एग्जाम्पल, इन द सेकंड सिनेरियो, इन द सेकंड पिक्चर, ये आ गया हॉस्पिटल से बाहर। ये पास में तो हॉस्पिटल में था, बट ही इज नॉट इन द हॉस्पिटल एनी मोर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ही वुड से आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर 6 वीक्स। नाउ टेक अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन डाउन बिलो. We use present perfect for a state, again, state which has gone up to the present. Main बात क्या है? उसका present तक आना. David is still in the hospital. We've lived here for 10 years. मतलब हम 10 साल से यहाँ पर हैं। क्या अभी भी यहाँ पर हैं? That's the main question. Sir, are we still in that same place if we are using this sentence? बिल्कुल ठीक है। सर पास्ट सिंपल में ये कहते हैं वी लिव्ड देयर फॉर 10 years। क्या ये बंदा, ये फैमिली अभी भी वहां पर मौजूद है? द आंसर इज दे डू नॉट लिव देयर एनीमोर। सो इन दीज टू sentences, in these two examples, in these two tenses, which tense connects me with the present? Which tense connects past with the present? सलीम फर्स्ट का नाम भी बता दें प्लीज। वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी, तो आई होप दैट दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। तो इसी के साथ आप मुझे ये वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दीजिएगा प्लीज, साथ साथ करते हैं। आई हैव बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और आई वॉज। अच्छा मुझे एक और बात बता दें प्लीज बिफोर वी मूव ऑन। आई हैव बीन इन द हॉस्पिटल, सर ये बीन हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? बस सही है, जबरदस्त है, जबरदस्त। अगर इसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म दिखेगी तो ये क्या बन जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ठीक है, सब साथ में मेरे? चलें सर, इसको सॉल्व करना प्लीज। कंप्लीट दिस लेटर टू द न्यूज़पेपर, पुट इन द प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। A few days ago I learned, मतलब few days ago past की बात है, I learned that someone plans to knock down the White Horse Inn. This pub has been the center of the village for centuries, village life for centuries. क्या करें सर? It stood या it has stood? Sir, it has stood. It has stood at our crossroads for 500 years. It has been famous या it was famous in the old days? सर क्योंकि पास की बात है तो it was famous in the old days. And Shakespeare once stayed here या has stayed here? Has stayed का मतलब शेक्सपियर साहब अभी भी जिंदा, तो he once stayed there, they say. अच्छा जी, अब ये बंदा कहता है the person who's reporting this whole thing, he says that I have lived in Brickfield, yeah, I lived in Brickfield all my life. Sir, I have lived in Brickfield all my life. He is the permanent resident of that place.
the villagers have known, या the villagers knew? So the villagers knew about the plans for less than a week. So for and since Iowa. So the villagers have known about the plans is the correct answer. The villagers have known about the plans for less than a week, and already there's a Save Our Pub camping. Last week we were happy, but this week we're angry because, and we will stop them, you'll see. So again, just for my understanding, if I want to say कि यार मेरे पास एक laptop है, how do I say that? चलें, इसके साथ सर एक काम करते हैं, इसको फिर से डायग्राम बना के देखते हैं. Again, my friends, take a look. We are dealing with time, and time is, हम consider करेंगे कि time moves in a linear state and it goes only in one direction, right? If that's true, then this should be, this should be present, which is now, let's say 2021, and this, ladies and gentlemen, is the past, let's say 1 year back. So this is 2020, the golden year in which we had COVID and everything. Okay. यहाँ पे मैं अब स्टेट का एक और फंक्शन दिखा रहा हूँ सर. आई एम टॉकिंग अबाउट पोजेशन. सही है. नाउ इफ आई वांट टू से कि मेरे पास एक गाड़ी है, हाउ डू आई से दैट? एंड शुड आई प्लॉट इट इन द पास्ट और शुड आई प्लॉट इट इन द प्रेजेंट? सर आई हैव अ कार एंड इट शुड बी प्लॉटेड इन प्रेजेंट. बिल्कुल ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर आई हैव अ कार. नाउ सपोज कि यही गाड़ी ना मेरे पास 2020 में भी थी और मैं इसको पास में लेके जाता हूँ. पास में क्या बोलूंगा? आई हैड अ कार. नाउ आई वांट टू से समवन, आई वांट टू टेल समवन इन फैक्ट कि यार ये जो गाड़ी तुम देख रहे हो ना, ये मेरे पास तब से अब तक है. ठीक है. आई वांट टू कनेक्ट दीज टू टाइम्स टुगेदर. तो क्या बोलेंगे सर? अब हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले मुझे चाहिए वर्ब की past participle, your third form. So let's establish that third form. So base form is have. Had is the past form. Has is the present form. Having is the ing form. And one more time, third form is also had. बिल्कुल ठीक है. तो सर हमें मिला एक subject. Then we need a helping verb. After that, we need verb in the past participle, and then the object. And since and for के rules वैसे ही है. ठीक है. अब मैं क्या बोलूँगा सर? The subject is I, and I should use have. The verb third form is I have had a car. If I want to talk about 2020, I will have to use since, and if I want to talk about 1 year, so I will say for a year. Is that clear, everyone? मतलब मेरे पास ये गाड़ी 1 साल से है. Now let me ask you some questions. Let me mix these two concepts up. मैं बोलना चाहता हूँ जी कि मैं एक लॉयर हूँ. How do I say that in English? Go for it. The whole sentence, Adnan. I am a lawyer. अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक लॉयर था, how do I say that? I was a lawyer. Perfect. मैं कहना चाहता हूँ जी मैं कोई 5 साल से एक लॉयर हूँ. How do I say this one now? नहीं भाई, ये फिर से गलत हो गया सर. I have a lawyer is a wrong sentence. Complete sentence दे मुझे. मैं 5 साल से एक लॉयर हूँ, तो I have been a lawyer for 5 years. सारा बलोच स्पेलिंग संभालिएगा प्लीज. This is a very big mistake for an examiner. I have been a lawyer. जावेद अली, ये फिर से गलती हो गई भाई.
देखो जब मैं बोलता हूँ ना आई एम अ लॉयर, इट्स अ ह्यूज ग्रामेटिकल मिस्टेक बिकॉज प्रेजेंट सिंपल तुमने खुद एस्टेब्लिश किया है, तुमने खुद ये बात बताई हुई कि इट डज नॉट टॉक अबाउट पास्ट, इट ओनली टॉक्स अबाउट प्रेजेंट. So when I want to connect these two times together, I have to use present perfect, and I should say I have been a lawyer for 5 years. Now, similarly, let's say मैं बोलता हूँ कि जी मेरे पास एक client है या मेरा एक client है. How do I say that in present? I have a client. Perfect. And if I want to say the same thing in past, यानी मेरे पास एक client था. How do I say this now? I had a client. ठीक है. और इसके बाद सर हमारे पास अगर यही दोनों बातों को कनेक्ट करने का मौका मिले तो मेरे पास 5 साल से एक क्लाइंट है. हाउ डू आई से दिस वन नाउ? तो आई हैव हैड अ क्लाइंट फॉर 5 years. Congratulations guys, you understand it now. Now let me show you this once again. Let me try and solve an exercise with you. ये देखें जी. But before we need to understand this. Now, present perfect tells us about the past and present at the same time. It connects past and present. I have had a client. बिल्कुल ठीक है कहफ. The aircraft has landed means that the aircraft is on the ground. अच्छा, this is a very nice thing about a book versus a teacher. अगर आप एक book अकेले पढ़ते हो ना तो आपको बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी. आपको पता है अभी जो हमने पूरा लेसन अभी तक किया है वो सिर्फ इन दो लाइनों से बना है. The present perfect of be and of have. The weather has been awful. I've had a lovely time. Thank you. इन दोनों sentences को इतनी डिटेल में ये अकेले अगर आप बुक पढ़ते तो I don't think that you would have understood that. So a teacher has the ability to squeeze the best part, the essence out of a book and give it to you in a very simplified way. Do you not agree with this? ये सिर्फ ये दो बातों को अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये दो सेंटेंसेस. ठीक है जी. तो प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ बी का मतलब क्या? द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ स्टेट. एंड द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ हैव का मतलब क्या? द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ पोजेशन. सर अभी तक हमने एक्शंस की कोई बात नहीं की है, एक्शन की बात हम करेंगे अब. नाउ टेक अ लुक. Present perfect tells us about the past and the present together. The aircraft has landed. That landed means that the aircraft is on the ground now. ठीक है जी. लैंड हुआ पास्ट में लेकिन अभी तक वो उसी कंडीशन में है. ठीक है. इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस इट इज प्रेजेंट सिंपल. अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता कि ये लैंड करता पास्ट में और फिर से उड़ जाता, देन इट इज नॉट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट माय फ्रेंड्स. अच्छा, इसको मैं फिर से एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं. पहले आप इसकी बेसिक सी एक्सरसाइज कर लें. ये देखें. When we use present perfect we see things as happening in the past but having a result in the present. मतलब हुई वो past में लेकिन present से किसी ना किसी तरह connected है. They have washed the dishes means कि वो अभी भी उसी washed state में है. The aircraft has landed means that it is on the ground now. Now again let me show you something else. And again we have to use a diagram. ठीक है जी. Now try and understand this guys again. Let's assume that time is linear and it only goes one way. ठीक है. मैं कहता हूं सर ये पास्ट है और ये फिर से प्रेजेंट है. सही है. Now try and understand this. Now say कि जी we won the cup or we won the competition. ठीक है. एंड ये एक ऐसा एक्शन है जो किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है? सर दिस इज ऑल पास्ट सिंपल. नाउ वी रिमेंबर दैट वी डिस्कस कि जी पास्ट सिंपल इज अ सिचुएशन और इट्स अ सेंटेंस, इट्स अ टेंस जो हमें पास्ट में कुछ स्टार्ट करके देता और पास्ट में ही उसको कंप्लीट करके भी देता. यानी इसकी रेंज बिल्कुल भी प्रेजेंट तक नहीं जा पाती है. डू यू गेट इट? It can only talk about past. It has no connection with the present. ठीक है. अच्छा, अब हम कहते हैं यार last year, let's suppose this is last year, this is again 2020 and last year we won the cup.
We won the competition, we won the trophy, and वो अभी भी हमारे पास है. ठीक है, we still have it. यानी हमने ये जीती थी पास्ट में, लेकिन अभी तक हम ही चैंपियन हैं. अभी तक वी हैव द कंट्रोल ओवर दैट कप, वी हैव द कंट्रोल ओवर दैट ट्रॉफी. इन सच अ केस यू कैन क्लियरली सी कि ये हमारे पास प्रेजेंट तक पहुंच गया. इफ दिस हैपेंस सर, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. एक और एग्जांपल देखते हैं. भाई मैंने क्लास तुम लोग के साथ पास में शुरू की थी, मे बी एट 2, राइट? लेकिन मैं अभी भी आपके साथ बैठा हूं. आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल विद यू, आई एम स्टिल टॉकिंग टू यू. सो आई स्टार्टेड द क्लास इन द पास्ट एंड आई एम स्टिल हियर. अच्छा, अब एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि इसमें ना फॉरन स्टूडेंट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नजर आना शुरू हो जाता है कि जी सर आप पास में भी पढ़ा रहे थे, आप अभी भी पढ़ा रहे हैं. तो उसकी डिस्टिंक्शन क्या है, मुझे ये बताओ. सिंस द डे वन, सिंस द फर्स्ट क्लास हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइट? यस और नो? मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं इस चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं कि हम फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रॉपर सेंटेंस दैट कम्स इनटू योर हेड? पूरा सेंटेंस अदनान, प्लीज पूरा सेंटेंस. सर, वी हैव बीन लर्निंग सिंस द फर्स्ट क्लास. ऐसे ही है? इज इट नॉट द केस? ठीक है. नाउ अस्यूम कि हम बात करते हैं वी हैव बीन लर्निंग सिंस द फर्स्ट क्लास, वी हैव बीन लर्निंग सिंस द फर्स्ट क्लास. बिल्कुल ठीक है. लेकिन सर अभी तक हमने कोई 5 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं और वो अभी तक कंप्लीट है. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी से? वी हैव बीन लर्निंग 5 टेंसेस और वी हैव लर्नड 5 टेंसेस. पूरा सेंटेंस प्लीज. वी हैव लर्नड. नाउ डोंट यू थिंक कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज टारगेटिंग एन ऑनगोइंग एक्शन, वो एक्शन जिसमें हम काम के होने को ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन द कंप्लीशन. And present perfect, on the other hand, talks about the completion of that activity. Do you understand what I'm saying, everyone? So, if we want to emphasize कि यार हम कितनी देर से ये काम कर रहे हैं, then our goal is present perfect continuous. But when we want to emphasize कि यार हमने कितना काम complete कर लिया है, then we should use present perfect. ठीक है? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा. Let's take a look at this one now. The same example that we discussed. Take a look at this one, everyone. The present perfect tells us about the past and the present. United have won the cup, so it's theirs now. इन्होंने पास्ट में कहीं जीता था, लेट्स से 2 मिनट पहले जीता हो, 10 मिनट पहले जीता हो, 1 दिन पहले जीता हो, but the cup is still in their possession, as you can see. Right? On the other hand, this other team, they had the cup, they won the cup in the past somewhere. जैसे हमने भी 1992 में जीता था, लेकिन अब हमारे पास नहीं है. So we won the cup last year. Past simple only talks about the past time which is finished, which is not connected with the present anymore. Present perfect, on the other hand, talks about a situation which happened in the past and वो अभी तक वैसे की वैसी है. मैं पास्ट में आया था लेकिन अभी तक आपके साथ हूँ. मैंने पास्ट में ये लैपटॉप स्टार्ट किया था, बट इट इज स्टिल देयर, इट इज स्टिल वर्किंग. डू यू गेट इट मेरे बच्चों? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अगर आप समझते हैं तो सर इसको जरा एक्सरसाइज को सॉल्व कर दें प्लीज मेरे साथ. अगेन आपकी चॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल. ठीक है. अगर आपको लगता है कि ये काम प्रेजेंट तक कनेक्टेड है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाइएगा. अगर आपको लगता है कि दिस इज ओनली अ थिंग ऑफ द पास्ट, देन यूज पास्ट सिंपल ओनली. सो पुट इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म. आई हैव डन ऑल द हाउस वर्क. कैन आई रिपीट इट अगेन? देखो अली जमाली, मैंने ये कहा कि अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लेन देन नहीं है. जैसे हमने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वो काम की जो अब प्रेजेंट में मौजूद नहीं है. वी आर नॉट द चैंपियंस एनी मोर. तो वी से वी वन द कप.
ठीक है, लेकिन अगर हम किसी ऐसी टीम की बात करें यार कि जिसने कप जीता और अभी भी उनके पास है, तो वो क्या बोलेंगे, वी हैव वन द कप दिस ईयर, इट इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट. सो एनी सिचुएशन विच इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर दैट. हुई पास्ट में लेकिन प्रेजेंट तक आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट में हुई, पास्ट में ही खत्म हो गई, पास्ट सिंपल फॉर दैट. ठीक है, ये पहली बात अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो put in the correct form of verb. I've done all the housework. The flat is really clean now. Because the flat is clean now, हमने पास में कहीं साफ किया था, अभी भी साफ है, तो we are using present perfect for that. A young boy bought the house next door, but they didn't. Sorry, a young couple bought the house next door, but they didn't live there long. वो वहां पर रहे नहीं सर. It is a thing of the past. Started in the past, ended in the past. ठीक है? Now, in this one, our visitors arrived या have arrived. And look at this sentence. So the correct answer is have arrived because they're still in the garden. They're still here. Do you get it? Similarly, sentence number 2, there's a problem with the television. Someone has repaired it or repaired it, but then it broke down again. Sir, repair किया था, लेकिन अभी उस repaired condition में नहीं है. What is the correct answer? Repaired only. उसामा, repairs तो बिल्कुल नहीं होगा ना यार. बिल्कुल ठीक है. Someone has repaired it, मेरा भाई, बिल्कुल ठीक है. Number 3, I lost my bank card. Yeah, I have lost my bank card because I can't find it anymore. So still it's lost, so I'll say I have lost it. The match started, the match has started, and still the match is going on. The match has started. ठीक है जी. My sister, क्या करें सर? My sister ran away because she came back. How can I get recorded lectures? And please do inform at least 15 minutes before the class. बेटा ये हम लोग कोई 48 घंटे से ये मैसेज चला रहे हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए आप जो है वो उसके गिवन नंबर पे मैसेज करें एंड यू विल गेट इट. ठीक है, ठीक है, सही है. आबिद अली, मैं वसीम को बोल भी देता हूँ, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे वो, एंड यू विल गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. अगर वसीम सुन रहे हैं तो प्लीज कांटेक्ट हिम. ठीक है जी. गिवन नंबर. ओके. ऑलराइट. तो my sister ran away is the right answer. ठीक है जी. Daniel earned some money last week, but I'm afraid he has spent it all because he has no money anymore. We have planted, yeah, we planted an apple tree in the garden. Unfortunately, it died. Sir, क्या करूं? We planted. Prices have gone up, या prices went up? So prices have gone up because it is all connected to this year. सागर कुमार, देखो this year दिख रहा है, मतलब इस साल तक की बात है इसमें. अगर इस साल तक की बात है तो present से connection बन गया. It means that we have to use present perfect now. ठीक है? सागर, talk to me. Do you understand this? चलें, जबरदस्त. Okay. Prices have gone up. हो गया जी. Someone turned on the hi-fi or has turned on the hi-fi? Sir, someone has turned on the hi-fi. Then I phoned the office at 11 to speak to the manager, but he isn't there today. क्या करें सर? I phoned. ठीक है, at 11 मतलब पास की बात है. Now take a look at this one. Prices, नंबर 8 एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा बेटा. प्राइसेस हैव गॉन अप, प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब शुड बी अ प्लूरल वन, हैज की जगह हैव आ जाएगा. एंड आई एम यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट हियर बिकॉज एवरीथिंग इज मोर एक्सपेंसिव दिस ईयर. दिस ईयर is used there, so it means that it is connected to the present.
सायरा आपको समझ आता? डू यू अंडरस्टैंड दिस बेटा? चलो. Then second last, I made a cake or I have made a cake. What is the right option? Sir, I have made a cake because the cake is still there. ठीक है? Number 12, the runner Amos Tamela has broken, yeah, broke the world record for 1500 meters in Frankfurt. Then 2 days here later in Helsinki, Lee Williams ran it again in an event faster time. तो क्या करे सर? Sir, the runner Tamela broke because उनका रिकॉर्ड अब तक मौजूद नहीं है. ठीक है जी? I hope it is clear. And now I'm giving you a complete picture of all the tenses that we have learned so far, and then we'll move on. ठीक हो गया? सब मेरे साथ हैं? चलें जी. तो सर ये थोड़ा सा अपने साथ साथ आपने बनाना है ये चीज़. मैं आपके साथ हूँ और मेरे साथ आप अपने पेपर पे ये बनाते जाइएगा. ओके सर. अगेन वी आर डीलिंग विद टाइम बिकॉज टेंसेस मीन टाइम. अच्छा, हमारे पास एक सिचुएशन होती है सर विच इज इन प्रेजेंट, देन वी हैव पास्ट. राइट? If something is happening right now, which tense is this? This is present, present continuous. And I should plot it here, right? Yes, all right. So it should look something like this. We need an ing form of verb and उसके साथ हमें चाहिए होता है एक अदद be. ठीक हो गया? If something was happening in the past, so it should be plotted here. Sorry for that. Let's use this one. This one is better. Okay, not good. ठीक है. So something was happening in the past. Here we again use ing form of verb. The helping verb is again be, but this time we use was and were. Here we were using is, am, are. सर अभी आपको स्क्रीन पर कौन से दो टेंसेस नजर आ रहे हैं? नाम बताएं मुझे उनके. Past continuous and present continuous. बिल्कुल ठीक है. Now suppose हम किसी फैक्ट को रिपोर्ट करना चाहते हैं. ठीक है? हम किसी रिपीटेड एक्शन को रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो सर हमें यहाँ पर एक ही टेंस मिलेगा. वो होगा कौन सा? प्रेजेंट सिंपल. ठीक है? Now something which was started in the past, ended in the past, has no connection with the present, यानी past completed या past finished action, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा सर? हमारे पास आ जाएगा past simple. ठीक है? अच्छा जी, ये काम हो रहा था और होते होते ये कुछ यूं चलते चलते it kept going and it reached all the way to the present. सर ये क्या बन गया? Which tense is this? This is, my friends, present perfect continuous. It was raining, it is raining, I was teaching, I am teaching. Together these two sentences can be formed. I have been teaching for quite some time and it has been raining for quite some time. ठीक है यहाँ तक? ठीक हो गया जी. सर लेकिन हम अब बात कर रहे हैं एक एक्शन या स्टेट की. ठीक है? यहां पर हमारे पास था has, have, been. This been is used with an ing form of verb. तो ये वाला been भाई क्या है? Helping verb. ठीक है?
ऑन दी अदर हैंड जब हम इन दो पार्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से विदाउट एनीथिंग कंटिन्यूसली हैपनिंग, तो हम डील करेंगे इसके साथ सर, वी आर डीलिंग विद प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें स्टेट भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है एंड अल्टीमेटली पोजेशन भी हो सकती है। सॉरी फॉर दैट गाइस, रन आउट ऑफ स्पेस। अच्छा जी, यहां तक सब मेरे साथ है। चले, मैंने भी आपको कहा था कि जैसे ही आप इस तरह की कोई चीज देखते हैं ना तो आपके दिमाग में फौरन से आ जाता है कि यार ये डीलिंग विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसके लिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आई हैव बीन डूइंग वर्सेस आई हैव डन। Sorry, I can't help. I've got oil on my hands and look at this situation. Sir, इस बंदे का नाम है Mike and Mike was repairing the car. Mike is repairing the car. कोई 2 घंटे से let's say he has been doing that, तो मैं क्या बोलूँगा जी, he has been repairing the car. ठीक है, यहाँ पे काम इसका complete नहीं हुआ. On the other hand, take a look at this one. The car is all right now. We can go into the town if you like. इस कंडीशन में माइक भाई साहब का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. In this situation, we can say that Mike has repaired his car. ये वो वाली कंपैरिजन है कि हम फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुई है. We have just completed कितने 5 tenses. ठीक है बच्चों. Now take a look at this one. We use the present perfect continuous for an action happening over a period of time, जो हमने यूनिट 16 में देखा था. We are thinking of Mike doing the repairing and getting oil on his hands. मतलब this action is, this situation or this tense is used when something is happening over a period of time. It is not completed. When we want to say how long something has been happening, कितनी देर से कोई काम हो रहा है. On the other hand, this one is used when we say कि जी काम जो है वो complete हो चुका है. It is used for a completed action. यानी हम यहाँ पे ये नहीं बताते कि काम कितनी कितनी देर से चल रहा है, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि यार कितना कंप्लीट हो गया, कितने कितने सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए. सो वी हैव कंप्लीटेड, मुझे खुद बताओ, इट कम्स नेचुरली, वी हैव कंप्लीटेड 2 सेशंस और वी हैव बीन कंप्लीटिंग 2 सेशंस. बताएं व्हिच इज द राइट ऑप्शन. हैव कंप्लीटेड, सब बताएंगे प्लीज. वी हैव कंप्लीटेड 2 सेशंस. अब आप खुद देखिएगा, सर वी हैव लर्नड इंग्लिश और वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश. सी, बिल्कुल ठीक है जी. दिस लास्ट एक्सरसाइज एंड देन वी आर मूविंग टू द न्यू टेंस. Now I want you to make a distinction or difference between present perfect and present perfect continuous. अगर आपको लगता है कि यार ये काम कंप्लीट हो चुका तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करिएगा. अगर आपको लगता है कि दिस इज ऑल अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन, यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर दैट. अग्रीड. चलें जी. तो आई हैव बीन डूइंग वर्सेस आई हैव डन. लुक एट दीज कॉन्वर्सेशंस एंड पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल. I feel tired. It's because you have been doing too much. Well, at least I have finished the report now. Do you understand the difference? Here, Sarah talks about finishing something. David कहते हैं जी, someone has been leaving or someone has left the ladder outside. What is the correct option, everyone? So someone has left the ladder outside. Look, I expect that's Mike. He has cleaned the windows or he has been cleaning the windows. He has, and look at the next sentence as well. I don't think that he has finished yet. तो अब बताएं क्या होना चाहिए. Salim, the whole sentence please. Sir, he has been cleaning the windows. I don't think that he has finished yet. You've got mud on your shoes. It's all right. I'll take them off. I have worked. I have been working in the garden.
Come on, guys. I have worked or I have been working in the garden. So I have been working in the garden. It looks a lot tidier. Well done. You have been doing a good job or you have done a good job. Everyone, you have been doing a good job or you have done a good job. So you have done a good job. Then I have heard or I have been hearing that you and Harriet are building a garage. I have heard that you and Harriet are building a garage. How long have you done that or how long have you been doing that? How long have you been doing that? बिल्कुल ठीक है जी. For about a month, we have been doing or we have done about half of it. We have done. Salim, it's done now. It's finished. We have done almost half of it. आधा काम हमने complete कर लिया. ठीक है? आधा काम हमने complete कर लिया. Present perfect continuous is not a very good option here. Now, ladies and gentlemen, once again, if something is happening right now, which tense should I use? Talk to me. Present continuous or present simple? If something is happening right now, which tense should I use? Sir, I should use present continuous. If something was happening in the past, past continuous is the best option. If I want to connect them both, then present perfect continuous. ठीक है? इस diagram में do you have anything to ask for? Anything that you do not understand? चले. Alright. Now sir, let's assume कि हमारे पास एक situation ऐसी है जो past से भी पहले होती है. ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे अब से प्रीवियस पास्ट या पास्ट ऑफ द पास्ट. राइट? सो प्रीवियस पास्ट ऑलवेज कम्स इन अ कॉम्बिनेशन विद द पास्ट सिंपल. ठीक है, कैसे होगा सर? इसकी कोई एग्जांपल देखें. मुझे एक बात बताओ, बल्कि इसके लिए लेट्स मेक अ न्यू सेशन, लेट्स मेक अ न्यू डायग्राम ऑल टुगेदर सो दैट वी कैन डू इट अ बिट मोर क्लियरली. ठीक है? All right. Again, the timeline. Sir, we have present, we have past, and we have the previous past. ठीक है? Now try and understand this, sir. मुझे बताएं, हम लोग क्लास ले रहे हैं इस वक्त. Is it present past and present past or previous past? It's a very obvious question, I know, but I'm trying to make a point here. So we are doing that in the present. यहाँ पर हम सर क्लास ले रहे हैं. Yes? Talk to me, guys. Yes. All right. हम सबको ये पता है कि 1400 years ago that this incident happened which changed the history. सर, कुछ तकरीबन 1400 साल पहले ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी. क्या वो प्रेजेंट में हुआ था, पास्ट में हुआ था? अगेन अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन. सर पास्ट में हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि पीस बी अपॉन हिम ही माइग्रेटेड. यहीं पे आएगा ना भाई, फ्रॉम मक्का. ठीक है? अच्छा, लेकिन सर इससे पहले काम हुआ था. मुझे बताएं कि ये हिजरत होने का प्लान एक तो ये था कि यार अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था. दूसरा, कुरैश ने जो है ना वो मारने का कोई प्लान भी बनाया हुआ था. डू यू रिमेंबर दैट? अच्छा, मुझे बताओ वो प्लान पहले बना या वो प्लान बाद में बना? ये इसी पास के साथ ही बना. वो पहले माइग्रेशन हुई है या पहले वो प्लान बना? which came first? So the plan came first. So here I will try to write it down here. Quraysh had
planned to kill him. अच्छा, this is a very good target for the tense for the translation as well. अगर आप इसी इंटर बोर्ड से पढ़े हुए हैं, मेट्रिक बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो यू मस्ट हैव सीन अ ट्रांसलेशन सेंटेंस. जब मैं पहुंचा तो प्लेन जा चुका था, जब मैं वहां गया तो मरीज मर चुका था. इस तरह के सेंटेंसेस देखे आपने? ठीक है सर, देखे मैं. तो मुझे बताओ, लेट्स अस्यूम के वी टॉक अबाउट द पेशेंट डाइंग एंड द डॉक्टर्स अराइवल. तो पहले मुझे बताओ, डॉक्टर पहले डॉक्टर आया या पहले पेशेंट मर गया? Which came first? Which happened first? So the death happened first. The patient died first. So patient had died and doctor came somewhere here. So doctor arrived somewhere here, and we connected with the conjunction which is when. So give me the final sentence now, everyone. When. Start your sentence with when and give me the final sentence. The patient died when the patient had died. बिल्कुल ठीक है जी. When the doctor came, the patient had died. So we are dealing with a tense which talks about previous past conditions, and that tense is past perfect tense. It uses a subject. Had is the only helping verb here. Verb always arrive in the third form, and then the object. Since and for की सारी conditions वैसे ही रहेगा. Let me repeat it once again. अरीबा कह रही हैं कि जी repeat कर दें once again. तो मेरे बच्चों, past perfect और past perfect continuous is a situation जो हम तब यूज करते हैं जब हमें past से पहले का कोई सीन दिखाना हो. ठीक है? If something happened before past, तो हम यहाँ पर लैंड करते हैं अपना past perfect. ठीक है? Anything that happened before. अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर एक और एग्जाम्पल देखते हैं. When I got to the station, the train had left. Now, what do you think? Which happened first, Ariba? पहले मैं पहुंचा हूं या पहले ट्रेन हमारी उसका डिपार्चर हुआ? Which action represents which sentence represents the first action happening? तो भाई अगर if I want to show this, the train had left is a situation of the previous past, and this when I got to the station happened in the past. I hope that it is clear now. Past perfect और past simple का ऑर्डर तो मैटर नहीं करता. नहीं बेटा, बिल्कुल मैटर नहीं करता. आप कोई भी सेंटेंस आगे पीछे कर सकते हो. ठीक है जी. अब इसको यहां से देख लें जरा एक दफा, एंड देन वी विल मूव टू द फ्यूचर टेंसेस. Past perfect, everyone. Look at this example. I felt really tired when I took the train to work yesterday because Sarah and I had been to a party. अब देखें यहाँ पे भी had been आ गया फिर से. We'll discuss that in a while. तो मुझे बताओ, ये पार्टी पे पहले गए या he felt really tired first? Which action happened first? Which situation happened first? The party or the feeling tired part? So party first and then the feeling tired part. We hadn't gone to the bed until after 1. I hadn't been on the train when I had a bit of a shock when I suddenly realized that I had left my wallet at home. Look at this sentence again. He suddenly realized. He realized that in the past, that before past, he had left his wallet at home. Do you understand this? If you do, then I want you to solve this for me. Basic understanding, guys.
Read about each situation and then tick the right answer. Two men delivered the sofa. I had already paid for it. Which came first? Sir, पहले delivery आई है या पहले payment गई है? Which happened first? The payment went first. The waiter brought our drinks. We had already had our soup. तो भाई पहले क्या हुआ? So the soup happened first. I had seen the film, so I read the book. What did I do first? Sir, I saw the film first. The program had ended, so I rewound the cassette. I rewound the cassette after or before the program had ended. Come on, guys. Sir, it happened after the program had ended. I had an invitation to the party, but I had arranged a trip to London. Which came first, the invitation or the arrangements? Sir, the arrangement. अच्छा मुझे ये बताओ, ये I had an invitation to the party. Is it past perfect? सही है सलीम, ठीक है. बाकी सब लोग बताएं. Is it past perfect? सर ये past simple है, बिल्कुल ठीक है. Now इस आखिरी बात को करते हैं. Take a look, everyone. One last time. Do not mix these two things together. Sir, if I want to say कि मेरे पास एक गाड़ी है, how do I say that? Again. And it should show in the present. So I have a car. If I want to say the same thing in past, tab I had a car. अगर मैं बोलना चाहता हूं यही गाड़ी मेरे पास कोई 1 साल से, अब ठीक है, the sentence becomes I have had a car. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि before I had this car मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी. अब क्या बोलूं? Only the tenses, guys. Only the tenses. ना भाई अदनान गलत हो गया ये बेटा. सर अब मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? I had a bike. बिल्कुल ठीक है जी. Do you get it? If you want to show something before the past, you need to use a helping verb and then the main verb. अच्छा, ये बहुत ज्यादा awkward लगेगा, इस वजह से हम लोग इसको ज्यादातर इंग्लिश में यूं बोलते हैं. सर यहाँ पे आप सभी लोग आउट हो गए. So when अभी तो बात सारी डिस्कस की थी, अभी तो सारी बात डिस्कस की थी यार कि अगर if you want to show something that happened before past, you use past perfect for that. I have a car is present, I had a car is past, I have had a car is the connection between past and present, and I had a car is the past perfect. Yes or no? ठीक है. इसी तरह if I want to say कि मैं एक डॉक्टर हूं, how do I say that in English? Second had is the verb. बिल्कुल ठीक है अदनान, बिल्कुल ठीक है. सर I am a doctor. ठीक है, यही बात अगर मैं पास में बोलना चाहूँ कि यार मैं पास में भी डॉक्टर था तो I was a doctor. But then I want to connect these two times together. मैं बोलना चाहता हूँ यार मैं 1 साल से डॉक्टर हूँ, अब क्या बोलूंगा? बताओ. सॉरी, अब मैं क्या बोलूंगा बच्चों? आसिफ शाह आई कह रहे हैं आई हैड अ डॉक्टर, मतलब मेरे पास एक डॉक्टर था. नहीं यार, ये नहीं कहना चाह रहा. मैं कहना चाह रहा हूँ मैं खुद एक डॉक्टर था. लेकिन अच्छा फिर से यार ये यहाँ पे कंफ्यूज हो गए सारे बच्चे. सर इफ्तिखार
ने जो है वो सिर्फ एक सही आंसर दिया अभी तक, बाकी हिल गए सब लोग। ये चीज सलीम भी आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। देखो भाई मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि अगेन प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंट मोमेंट आई एम अ डॉक्टर, in the past I was a doctor. if I want to say कि यार मैं इस टाइम से इस टाइम तक, सॉरी, इस टाइम से इस टाइम तक मैं दोनों जगह पर डॉक्टर था, तो I have been a doctor for 2 years. And if I want to say something before that, I would say I had been a student. ठीक है बच्चों, do you understand this? किस किस को ये बात समझ आ गई है बिल्कुल सही से एकदम? कहफ, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा. Now try and understand this once again. Stay with me if you don't understand, and translate this sentence. All right. Can you see this watch that I have right now? Do you see that? So right now I have this watch, and it's in the present moment. What should I say in the present moment? कि यार मेरे पास ये घड़ी है. बताएं कहफ. मैं बता रहा हूँ बेटा, अली रजा मेरे साथ रहेगा. सर मैं इस वक्त बोलूंगा आई हैव अ वॉच. नाउ अस्यूम कि मैं मुझसे ये वॉच गई खो और अगले ही सेकंड में ये अभी मेरे पास नहीं है. नाउ इट इज अ मोमेंट ऑफ द पास्ट. अब मैं क्या बोलूं? आई हैड अ वॉच. यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है सर. आई हैड अ वॉच ना, ठीक है, सेम सेंटेंस को लेके चलेंगे. आई लॉस्ट अ वॉच, आई लॉस्ट माई वॉच इज परफेक्टली फाइन, बट अभी उसी सेम सेंटेंस को लेके चले. आई हैड अ वॉच, ठीक हो गया. अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ यार यही यही वॉच जो है ना अभी भी मेरे पास है, और मैंने ये 2 साल पहले खरीदी थी, 2 साल से अब तक मेरे पास है. हाउ डू आई से दैट? नहीं, सैयद उसामा, आई हैव बीन अ वॉच का मतलब मैं खुद एक घड़ी था 2 साल से. यू डोंट वांट टू से दैट. आई हैव हैड अ वॉच. ठीक है, सही है. आई हैव हैड अ वॉच फॉर 2 years. यहां तक कहा मेरे साथ हैं आप? ठीक है. अच्छा, अब इसी बात को ना अभी मैं पास्ट परफेक्ट में शिफ्ट करना चाह रहा हूं. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार मेरे पास ये घड़ी होने से पहले ना एक एक और घड़ी हुआ करती थी. ठीक है. अब इस सेंटेंस में ये निकालो कि यार मेरे पास इस घड़ी को निकाल दो. सही है. मैं कह रहा हूं कि आई हैड अ वॉच बिफोर दिस. सही है. ट्राई टू यूज पास्ट परफेक्ट फॉर दैट. व्हाट वुड यू से? आई हैड अ डिफरेंट वॉच. Do you get it? Now again, let me explain. देखो, the first structure को देखिए ना इधर. We need a subject, we need the helping verb, we need the verb in the third form, and then we need the object. ठीक है? Subject क्या जी? I. Helping verb is had. What is the third form of verb? I had, and then we need a watch. I hope that it is clear now. चलें जी, गुड है. इफ इट इज क्लियर तो मेरे बच्चों आखिरी दफा ये एक्सरसाइज, और इसके बाद हम लोग करेंगे ऑफ इंशाल्लाह. भी मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया ये. देखें, I'm looking for a sentence where you can see them together. डबल had, जो देख के आप इतना परेशान हो गए हो. चलें, आएगा इंशाल्लाह. देखें जी, we use the past simple to talk about the things in the past. ये हमने बात एस्टेब्लिश कर ली. Past simple is used for the actions in the story to tell about. Sorry. Okay. यहाँ पर हम लोग थे पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे थे. Here are some more examples.
It was 20 to 6. Most of the shop had just closed. Uh, I went to the box office at lunchtime, but they had already sold. अच्छा मसला पता है क्या हो रहा है तुम लोग को? हमें यहाँ पर एक अलग वर्ब दिख रही है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है. हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. What I've done in case of possession, मैंने helping verb और third form of verb दोनों को same रखा. सही है, जो possession में same होगा. I have a car, past में ले जाओगे. I had a car, उसको further past में लेके जाओगे तो it should be, इस become की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? I had a car. Do you understand this? Because the first had is the helping verb and the second had is the main verb. ये बात समझ में आती है? चलें जी. तो एक रिवीजन एंड देन लेट्स एंड द क्लास हियर. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग. तो मेरे बच्चों, टॉक टू मी व्हेन समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ. फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग टू मी. जी डबल हैड की वजह से हो रहा है, नो इश्यूज. You will solve a little bit of exercise and it will be done. Okay, once again, sir, if something is happening right now, I'm typing, I'm looking at you, I'm teaching you, which tense am I using? Present continuous. Sir, if I was doing something in the past, I was teaching you, I was talking to you, I was doing something, sab batayenge please, everyone has to talk to me. Sir, past continuous, ठीक है? If you want to, आ जाएगा Ali Raza, don't worry, don't worry. If you want to connect these two times together, something was happening, something is still happening, this becomes present perfect continuous. यानी मैं तभी पढ़ा रहा था, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. I was teaching, I am teaching, I have been teaching. Clear है? सर इसके बाद हमने क्या किया? हमने कहा जी if we want to show something like a daily routine or a repeated action, we should use present simple for that. True? If you want to talk about something that started in the past, ended in the past, it was finished, sir ये क्या बन गया? ये बन गया past simple. Now here is the tricky part. If you want to connect these two times together, I was happy, I am happy, मैं दोनों को साथ में बोलना चाहता हूं तो मैं क्या बोलता हूं जी? I have been happy. This is called present perfect state version. ठीक है? अगर मेरे पास एक लैपटॉप था, लैपटॉप है, मैं दोनों को साथ में कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं क्या बोलता हूं? सर आई हैव हैड अ लैपटॉप. ठीक है? I have had a laptop. The first have is the helping verb and then the second had is the main verb. ठीक है? देखें. Okay. So I have had a laptop. This is the helping verb and this is the main verb. ठीक है? Now I converted this into past perfect. तो ये helping verb and this one is the main verb. बस ये हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. ठीक है? Past perfect in possession form. I have had a laptop suggests that yes, I still have it. ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं. See you all in the next class. I hope that you understood this. और अगर किसी को थोड़ी सी भी चीज समझ में नहीं आई, I'm always available. Do send me a text. You can call me anytime you want. परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी. ठीक है? असाइनमेंट्स में अभी भेज दूंगा. ठीक है? चलो. Take good care of yourself. Allah Hafiz. Stay blessed. Stay happy.